Okay, so as you all know that in today's session, we're going to discuss about the transitions, animations, and how we can present a slideshow. These were the things which we're going to discuss in today's session. But before starting that, I'm going to give you a short recap and a conclusion that the things which we have discussed, the features which we have discussed in up till now. So I'm going to give you a short recap. In previous two sessions, we have discussed about the whole home tab, like how you can give the text about some fonts, bold, italic, underline, and you can change the theme font as well, color and size of the text. And with this, we have also discussed about the how we can set the alignments, bullets, numberings, and with the Roman numbers as well, alphabets as well. So these were the things which we have discussed in the sessions. Okay. So with this, we have discussed about how we can give the shapes, we can give the quick styles, like we can give many theme colors to our slides. These were things which we have discussed in previous sessions. Okay. Okay. Then we have to discuss. Then we have discussed about the shape fills, shape outline, weight, dashes. These were some basic things which we have discussed previously. We have also discussed about the shadow, reflection, glow. These were actually the shape effects that we can give to our presentation and make it more attractive. Okay. With this, we have also discussed about the in the insert tab. We have discussed like how we can add a picture and how we can edit the picture as well. Picture को add करना and then edit करना उस picture को. These were the main things which we discussed in the previous session. So with this, we have also discussed about how we can insert any of the symbol or any of the image from clip art option that is available in the Microsoft tools. Okay, then we have discussed about the shapes, the smart art and charts. In yesterday's session, even we have discussed about the charts and how we can work on the charts and how we can display the things in the form of chart. So ये जो है हमारा कल का ही topic था that we have discussed in yesterday's session. Okay, then we have discussed about how we can insert these word art option and how we can insert the date, time, slide numbers, object. These were all things which we have discussed in the previous session. Okay, then we have discussed about how we can give the how we can insert any equation, any symbol in the slides or video as well. We have discussed how we can add the video, and there are many other tools which we can use in the video to make it more attractive, and we can also give it a title cover. So these were the things you can easily get in the previous sessions, those who have not attended the session. Okay, with this, we have discussed about the design. In design tab, we have discussed many things, like many templates we have discussed. These were some templates that were discussed in the previous session कि आप इनमें से कोई सी भी जो है वो template, कोई सा भी design you can choose and make the presentation on it. Okay, we have also discussed in the previous sessions like we can show our slides in the portrait form as well, the landscape form as well. We have the page setup option as well. These were all things which we have discussed. Okay, colors were also there to be discussed. Font styles we have discussed in yesterday's session. These were things. With this, we have also discussed about the shape effects that we can give to our text, which we can give to our slide. So ये जो है मैंने आपको कहा था कि आपको explore कीजिएगा, and this effect option you will going to insert in your presentation and you're going to display us in the session. So ये जो है आप explore कीजिएगा. This is a very effective area that we can give to our slide, to our presentation. We have also discussed about the background styles as well. These were some background styles that were discussed in the yesterday's session, and we can get any of the background you want to get from here. Okay, we have the option hide background graphic as well. Like इससे ये होगा कि जो भी आपने background insert किया होगा, जो भी graphics आपने graphical tools आपने use किए होंगे अपने background के ऊपर, so this will going to be hided and you will going to simply display one color background. So इसकी डिटेल में हम लोग जो previous session में बात कर चुके हैं, so आपको वहां से easily सब चीजें मिल जाएंगी. Okay, so then today's session we will going to discuss about the transitions, like how we can give our text or slides the transitions that will going to display in front of the viewer a good impression. इससे ये होगा कि आपकी slides पे जो एक अच्छा impression पड़ेगा and you will going to get a good impression from the viewer. Okay, wait a second, I'm going to share again my screen because I think it's some issue was going on. Okay,
So we will go to today's we're going to discuss about the transitions. सबसे पहले तो आपको यहाँ शो हो रहा होगा, यहाँ बहुत सारी जो आपको ट्रांजिशन शो हो रही होंगी, ये बहुत डिफरेंट डिफरेंट ट्रांजिशन है, आप इनमें से कोई सी भी ट्रांजिशन जो है वो यूज कर सकते हैं. लाइक यहाँ पे कट ऑप्शन की ट्रांजिशन है, लाइक अगर आप सिलेक्ट करेंगे तो आपको जो स्लाइड होगी वो कट वेरिएशन में आ जाएगी. अभी जो है फिलहाल आप सिर्फ और सिर्फ इन चीजों को देखिए, और हमारे पास एक एग्जाम्पल प्रेजेंटेशन जो है रेडी है, वहां पे इन सब चीजों को हम आपको डिस्प्ले करके दिखाएंगे. दीज वर एक्चुअली सम things that we can give to our slide. These were transitions like fly through, orbit, window, cube. These were things that you can easily give to your presentation. Okay. With this you have the effect option as well. आप यहाँ आपके पास यहाँ पे effect option भी है. आप इसको जो है ये effect option में ये होगा usually के जो आपकी जो ट्रांजिशन जो होगी, लाइक यहाँ पे बहुत सारे आपको ट्रांजिशन स्टाइल्स यू हैव शोन, सो दैट विल बी अकर इन अ ब्लैक कलर, यानी कि ब्लैक कलर की ट्रांजिशन आपको जो है अपनी स्क्रीन पर शोन हो रही होगी. ये किस तरह होगी आपको बताएंगे अभी अपनी एग्जांपल प्रेजेंटेशन में ऐड करके. You can, if you will going to see a timings here, like you can see that there are very timings areas as well. Like अभी जो आपको यहाँ पे कुछ वॉइसेस मेरी जो है वो स्क्रीन शेयरिंग में आपको यहाँ पे आवाज आई होगी कुछ साउंड्स की. सो दीज वर एक्चुअली सम साउंड्स दैट यू कैन गिव टू योर ट्रांजिशन एज वेल. आपके पास यहाँ बहुत सारे साउंड इफेक्ट्स हैं दैट यू कैन इजीली गिव टू योर slides. These were some things like you can give arrow, bomb, breeze. ये आप different आपके पास जो है ये sounds effects हैं you can give to your presentation. This is a very effective tool that will going to be used in your presentations. Okay, so these were some sound effects that you can give to your presentation. With this, you have the duration option as well. You can adjust the transition as well. Like अगर आपको अपनी presentation एक slide show form में show करनी है जिसमें आपको transition show करने हैं, so आप यहाँ पे time भी वहाँ पे manage कर सकते हैं. Like कितने मिनट बाद जो transition change होगी, like 75 seconds, 50 seconds, 25 seconds, 1 second. So इस तरह जो है different times you can see here. So you can give any of time you want to insert in your presentation for the transitions. Okay, then we have option of apply to all. इससे ये होगा कि your all the transition was applied to all the presentation. Normally ऐसा होता है कि आपको each and every presentation की slide पे आपको या आपको अलग से जो है वो transition apply करना होगा. पर अगर आपको एक ही transition you want to give only one transition to every slide, so you can easily select any of the transition and then you will click on apply to all. So that transition would be applied to all the slides. Okay, then if you want to move ahead, so you have the animation option as well. like यहाँ पे आपको animation option नजर आ रहा होगा, so that आपको यहाँ पे आपकी जो slides हैं वो animated form में you can see on your screen. लाइक यहाँ पे बहुत सारे एनिमेशन है, फेड, फ्लाई एंड फ्लोट. सो ये सब एनिमेशन जो है वो आपकी टेक्स्ट और आपकी स्लाइड पे अफेक्ट करेगी. So these were the things that we are going to experience it. We're going to explore it in our example presentation which we have made. Okay, so these were some things that we can these were some animations that we can get from the animation option and we can apply to our presentation. So यहाँ पे different animations हैं, तो कोई सी भी जो है आप use कर सकते हैं and you need to explore yourself that what is these animation will going to act it. किस तरह जो है ये presentation जो है आपकी presentation को more attractive show कर सकती है. Okay, with this you have this add animation option which you have discussed previously. Okay, you have an animation panel as well. ओके, सो यहाँ पे नॉर्मली ये होगा कि आपको जितनी भी आपने एनिमेशन जो है वो अप्लाई किए, लाइक यू हैव अप्लाई डिफरेंट एनिमेशंस ऑन डिफरेंट स्लाइड्स. लाइक आपने स्लाइड 1 पे डिफरेंट एनिमेशन अप्लाई किए, स्लाइड 2 पे डिफरेंट एनिमेशन अप्लाई किए. हियर यू विल गोइंग टू सी ईच एंड एवरी एनिमेशन वन बाय वन इन अ सीरीज फॉर्म. तो यहाँ पे आपको जो है आपकी सारी जो है वो एनिमेशन यूजुअली आपको शोन हो रही होगी. ओके, with this you have a slideshow option as well. आपको यहाँ पे slideshow option भी shown हो रहा होगा. You will going to see the slideshow option. Like if you have created your presentation and now you want to show in a slideshow form, so you can show it from beginning to end. You will adjust the timing. You will adjust the things which you want to hide. Like यहाँ पे बहुत सारे जो आपको option यहाँ पे show हो रहे होंगे. Like यहाँ पे आपको सबसे पहले set up slideshow आपको option यहाँ पे show हो रहा होगा. Now you're going to appear a menu bar and you have to adjust that slideshow. अब आपको यहाँ पे slideshow adjust करना है. लाइक आपको यहाँ पे फुल स्क्रीन शो करनी है, या आपने कोई सिलेक्टेड विंडो जो आपने सिलेक्ट की है सिर्फ वो आपको शो करना है, या आपको जो है वो प्रेजेंटेशन के समेत पूरी विंडो, यानी कि इसके अंदर ये होगा कि आपका जो है वो टूल बार जो विच विल गोइंग टू बी अकर्ड इन योर बॉटम विंडो. सो आपको यहाँ पे जो है टूल बार भी आपके प्रेजेंटेशन में शो हो रहा होगा. एंड इफ यू विल गोइंग टू यूज दिस ऑप्शन लाइक प्रेजेंटेड बाय अ स्पीकर फुल स्क्रीन, सो आपको सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंटेशन की फुल स्क्रीन आपको शो हो रही होगी. तो यहाँ पे डिफरेंट ये चीजें हैं जो आपको यहाँ पे एडजस्ट करनी है फॉर स्टार्टिंग योर स्लाइड शो.
Okay, you have a pen color as well. Like अगर आपको स्लाइड शो के दरमियान if you want to explain something, so you have an option and then you have a variety of option of pen, markers, paints. वहाँ पे आप कोई सी भी जो है वो पेन से आप अंडरलाइन कर सकते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर, कोई भी चीज आपको एक्सप्लेन करनी है, तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट कलर्स हैं मार्कर्स के, तो ये भी अभी जो है हम इसको एक्सपीरियंस करेंगे. ओके, लेजर पॉइंटर्स भी हैं आपके पास, लेजर का भी आपके पास ऑप्शन होगा, हैव द ऑप्शन ऑफ लेजर एज वेल, एंड यू हैव अ थ्री कलर, ब्लू, ग्रीन एंड रेड. यू कैन चूज एनी ऑफ द कलर यू वांट टू चूज. ओके, सो यू हैव अ, नाउ यू गोइंग टू हैव अ शो स्लाइड्स. लाइक अब आपको यहाँ पे स्टार्टिंग से एंड तक शो करनी है आपको, जो भी अगर आपने स्लाइड को आपने जिस स्लाइड से आपने स्टार्ट करना है अपना स्लाइड शो, यू गोइंग टू इंसर्ट दैट स्लाइड हियर. Like if you want to start your slideshow from third slide, or you have to start the slideshow from second, so आप यहाँ पे वो उस स्लाइड शो का उस स्लाइड का नंबर आप यहाँ मेंशन कर सकते हैं. And then here you go to mention that number where you have to end the slide show. Like अगर मैंने जो है यहाँ पे 1 से start करना है and I have to end on fifth slide, so I'm going to type as like that. Like my slide show is going to start from first slide to fifth slide. Okay, then you have an option of advanced slide. Like अब आपको जो है टाइमिंग इसके डिपेंड रहना है, यानी कि आपने जो टाइमिंग एडजस्ट की है, जो मैं पिछली एनिमेशन एरिया में हम जो अभी हम लोग डिस्कस करके आए हैं, अगर आपको टाइमिंग पे अगर आपको अपनी जो है वो presentation आगे move करनी है, so you're going to select the option of using time if present, or if you want to manually move your presentation from one slide to another slide, so you can choose manual option. So यहाँ पे आपको दोनों options you have gotten, so that you can move your slide manually as well, and you're going to shift your slide according to timer as well. So यहाँ पे जो है आपको ये ऑप्शन मिल जाएंगे. मल्टीपल मॉनिटर्स का क्या ऑप्शन है यहाँ पे, अगर आपने ये देखिए, यूजली अगर आप मल्टीपल मॉनिटर्स चूज करते हैं, सो इफ यू हैव क्रिएट टू प्रेजेंटेशंस एंड यू हैव टू शो इट ऑन अ वन टाइम, सो आप यहाँ पे इस शो प्रेजेंटेशन को क्लिक करके, एंड नाउ यू गोइंग टू क्लिक ऑन चेक बटन. आई हैवंट मेड अ टू प्रेजेंटेशंस येट, और मेरे पास इस वक्त दोनों प्रेजेंटेशन ओपन नहीं है. आई हैव ओनली opened this one presentation which I am explaining you, so I cannot able to do this feature, but you will going to explore it. Like आप यहाँ पे दो प्रेजेंटेशन को एक टाइम में ओपन कीजिएगा, एंड देन यू विल गोइंग टू शो हाउ यू विल गोइंग टू प्रेजेंट both the presentation at one time. So then you have to present OK, and then your settings would be adjust. यहाँ पे आपको जो है आपकी settings यहाँ पे adjust हो जाएगी. Okay. So this was actually some options that you have to put, and you have to adjust these options from starting your slideshow, before starting your slideshow. Okay, फिर यहाँ पे आपको hide slide का option होगा. You are going to hide any of slide you want to hide. यानी कि अगर आपको कोई slide नहीं show करनी है अपनी slide show के दरमियान, so you can easily hide that slide in between the slideshow. You have the option of rehearse time as well. Like सबसे पहले आप start करने से पहले you will going to rehearse your slideshow, so that your slideshow would don't have any of the issue or error in between the slideshow. कोई भी एरर ना हो, इसलिए आप उसको पहले एक तरह चेक कर सकते हैं, रिहर्स कर सकते हैं उस स्लाइड शो को. यू हैव द रिकॉर्ड स्लाइड शो एज वेल, यानी कि जो आप स्लाइड शो स्टार्ट कर रहे हैं, द स्लाइड शो which you are showing in front of your viewers, in front of your audience, so you will going to record that slide show as well. Like you're going to start the recording from beginning and end, and that recording would be end on the last slide. So आप उस स्लाइड शो को रिकॉर्ड भी कर सकते हैं from this option. Okay, then we have an option of play narrations, like the narration which you have given in your slideshow. These narration actually is actually the things which you have inserted in your slideshow. It would be your color, the background you have selected. If you have add any animation, so the animation would be also counted in this narration. So जितनी चीजें आपने अपनी स्लाइड शो में ऐड की हैं, चाहे वो कोई कलर हो, किसी चीज को आपने हाईलाइट किया हो, किसी चीज को आपने बोल्ड किया हो, आपने किसी चीज का बैकग्राउंड चेंज किया हो, या किसी चीज को आपने हाईलाइट किया हो, so these all things came under this narration. So if you're going to tick on this option, so it will going to play the narrations as well with the slideshow. Use timing option will going to make your slideshow on your given timing. अगर आपने timing जो है set की है, so your slideshow will be start on the timing which you have set it and end on that timing which you have set it. So if you're going to press on use timing, so your slideshow would be start and end on the suitable timing. और अगर आपको timing पे add नहीं करना, so you can remove it as well. Okay, then we have the show media controls. So show media control are those controls that were actually the in between the slideshow. You're going to see some option like आपको वहाँ पे कुछ forward करने का option या back करने का option and pause resume करने के option आपको इस feature से आएंगे. If you're going to attach it, so your slideshow would not have the fast forward option or reverse option. So आपका slideshow जो आपके slideshow होगा उसके अंदर कोई सा भी मतलब आप उसको forward नहीं कर सकते या pause नहीं कर
सकते, रिज्यूम नहीं कर सकते, अपनी तरह से उसको कंट्रोल नहीं कर सकते if you will not tick on this option, show media controls. Okay, then you have the resolution option as well. आपके यहाँ मॉनिटर का जो रेजोल्यूशन होगा उसको आपको सिलेक्ट करना है. आपको यहाँ पे कुछ फ्रेम रेट्स दिए जाएंगे, 124 and 768. These were the frame rate. If you choose this frame rate, so usually this was slow and high fidelity. So यहाँ पे ये होगा कि अगर आप यहाँ पे लिखा हुआ भी आगे कि ये slow थोड़ा सा वर्क करेगा because this is a large frame rate, and if you have selected a large frame rate and you have add many narrations like animations भी आपने add किए हैं, transitions भी add किए हैं, you have done a high graphical work, and if you choose this frame rate, so definitely it will it will have a lacking in between slideshow, and it cannot be make it very smooth. इसको आप smooth तरीके से आप इसको run नहीं कर सकते because it was a high frame rate. So I suggest you to use the current resolution. Like आपकी जो monitor का जो resolution है, if your monitor is in a square form or in a rectangle form, आपका जो भी monitor resolution है, so if you use that resolution, so it will be suitable for you to display the slideshow. इसके अलावा आपके पास और भी डिफरेंट डिफरेंट फ्रेम रेट्स हैं, लाइक 800 टू 800 बाय 600, 848 फॉर 480. तो यहाँ बहुत सारे डिफरेंट रेजोल्यूशंस हैं, पर अगर आप अपना करंट रेजोल्यूशन चूज करते हैं, सो इट विल बी सुटेबल एंड इट विल बी गुड दैट यू विल यूज योर करंट रेजोल्यूशन, सो दैट यू विल गोइंग टू सी ईच एंड एवरीथिंग. जो भी आपने चीजें जो आपने बनाई होगी अपने रेजोल्यूशन पे, वो सब कुछ जो है शोन हो रही होगी स्लाइड शो में, सब कुछ नजर आ रही होगी इफ यू चूज दिस current resolution. So these were some things which we have to discuss, like animations, transitions. तो ये भी हम आपको दिखाएंगे अपनी example जो presentation we have created. So we're going to show these transition animation in that presentation. Okay, so now we have a review option. Usually this review option have only one useful feature. Like यहाँ पे सिर्फ एक ही useful feature है, वो है research का. You can now research any topic you want to research. You don't want to open the Google or you have to do a web search. आप यहाँ से easily कोई भी अगर आपने कोई टर्म को रिसर्च करना है, आपने किसी भी चीज को यहाँ पे डिस्प्ले करना है, कोई चीज रिसर्च करनी है, तो आप यहाँ पे easily you can get from the review tab and from the proofing option you're going to get this feature, research feature, and you can type any of the word you want to see, so it will going to display you. Like let's take an example, like if you want to search any of the thing, like अगर मैं यहाँ पे कोई भी चीज सर्च करता हूँ, टेक्नोलॉजी, लेट्स सी यहाँ पे कोई टर्म है टेक्नोलॉजी, सो इफ यू गोइंग टू सर्च इट, सो यहाँ पे आपको जो है see now you want to now you have an English dictionary से जो है आपको टर्म का मीनिंग जो मिल जाएगा. like this is an application of tools and method, the study development and application of devices, machine techniques, manufacturing और processes. तो यहाँ पे आपको different आपको यहाँ पे इसकी मीनिंग्स मिल जाएंगे और अच्छी खासी यहाँ पे रिसर्च आपको यहाँ पे शोन हो रही है. so it's an effective tool. You can use it and you can easily research any of the term you want to research in the Microsoft PowerPoint. आपको कोई भी वेबसाइट या वेबसाइट पे जाने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ पे easily जाके कोई सी भी टर्म सर्च कर सकते हैं and you will going to write that research and add that research in your presentation as well. आप अपनी presentation में वो research भी add कर सकते हैं. Okay, you have an option of this dictionary as well. like आपको यहाँ पे एक dictionary का option भी shown हो रहा होगा, मैं आपको भी दिखाता हूँ. Okay, now if you want to see here, you have an option of translation, translate. so यहाँ पे usually जो word जो आपने insert किया है, वो आपको उसकी translation जो है वो आपको shown हो रही होगी. like आपको यहाँ पे सबसे पहले you have to select like आपको कौन सी language में जो है translate करना है. you have an option of Arabic, Chinese, English, French, German, Italian, Japanese, Korean, Spanish. तो यहाँ पे आपको डिक्शनरी की कोई कुछ आपको जो है यहाँ पे लैंग्वेजेस अवेलेबल है and you can choose any of the language you want to translate your word. आप यहाँ पे कोई सी भी यूज कर सकते हैं जो कि जिस लैंग्वेज में आपको अपना वर्ड ट्रांसलेट करना है. ओके, सो यू हैव एन ऑप्शन ऑफ लैंग्वेज एज वेल. आप यहाँ पे लैंग्वेज प्रेफरेंस भी ले सकते हैं. सी दिस वाज एक्चुअली लैंग्वेज प्रेफरेंस और यहाँ पे यूजुअली आप अपनी जो है वो लैंग्वेज इंसर्ट कर सकते हैं. लाइक सी यू हैव इंसर्टेड द इंग्लिश लैंग्वेज एंड बेसिकली योर होल प्रेजेंटेशन वाज मेड ऑन इंग्लिश लैंग्वेज. सो दिस वाज एक्चुअली अ बेसिक थिंग व्हिच दिस ऑप्शन विल गो टू शो यू. यहाँ पे आपको इंग्लिश जो है वो शो हो रही है बिकॉज यू हैव enabled दिस इंग्लिश लैंग्वेज. एंड इफ यू वांट टू क्रिएट योर प्रेजेंटेशन इन एनी अदर लैंग्वेज, तो आप यहाँ पे कोई से भी और लैंग्वेज आप ऐड कर सकते हैं. इन दिस ऐड एडिशनल एडिटिंग लैंग्वेज, यू कैन ऐड एनी ऑफ द लैंग्वेज यू वांट टू ऐड एंड यू वांट टू मेड ऑन दैट लैंग्वेज योर प्रेजेंटेशन. सो आप यहाँ से कोई सी भी जो है आप चूज कर सकते हैं अपनी मर्जी से.
यहाँ पे उर्दू भी जो है यहाँ पे शोन हो रही है, और यहाँ पे बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं, आप इनमें से कोई भी लैंग्वेज चूज कर सकते हैं, यू विल गोइंग टू मेड द प्रेजेंटेशन ऑन इट, बट यू नो द प्रेजेंटेशन, लाइक आपको उस लैंग्वेज के बारे में पता हो, सो दैट यू कैन easily create your presentation on that language. So these all things was dependent on language and how you can choose the language, how you can change the language from English to any other language. So यहाँ पे सब कुछ आपको लैंग्वेज के बारे में चीजें शोन हो रही है। एडवांस सेटिंग में अगर जाते हैं, तो यहाँ पे आपको बहुत सारी अदर थिंग्स आपको जो यहाँ पे मेंशन हो रही होंगी, लाइक आपको यहाँ पे सबसे पहले एडिटिंग ऑप्शन में जो है वो जो है आपको यहाँ पे व्हेन सेलेक्टिंग ऑटोमेटिकली सेलेक्ट एंटायर वर्ड। तो एक्चुअली ये माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट की सेटिंग्स हैं जो कि आपको पहले से सेट होके दी जाती हैं। These were the image size quality as well, cut copy paste option as well, editing option as well. These were all options that was already setted and already make it for you, so that you don't have any problem by creating anything. आपको यहाँ पे कोई भी जो है वो issue नहीं आएगा, because these were already they were already set it each and everything that you will go to use in your presentation. Like यहाँ पे आपको स्लाइड शो का ऑप्शन यहाँ पे सब कुछ दिया हुआ है, आपको डिस्प्ले का जो है वो सारे ऑप्शन एक्टिवेट हैं, सारे ऑप्शंस, so आप easily जो है अपनी presentation बना सकते हैं, and you will going to display it as well. Okay, so this were actually the things that would come in under this all things, like आपको यहाँ बहुत सारी settings आपको यहाँ पे मिल जाएंगी. So actually this was not our use, so ये हमारा use नहीं है. We just have to work on our features, we just have to discuss the features that would be add in the presentation. आपको सिर्फ और सिर्फ features को पता होना चाहिए जो जो Microsoft PowerPoint में जो है वो update हुए हैं, so that you can use it in your presentation. अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है, if you have any type of question query, you can ask in the chat box, because there are so many features that we have discussed previously as well, and there are many features which we are discussing as well in this session as well. So आपको कोई सा भी feature आपको नहीं समझ में आया, so you can ask, so that we're going to move on our example presentation which we have made. Okay, if you have any questions, so you can ask in the chat box. Okay, so last thing in this Microsoft PowerPoint is view tab. So this was actually the view tab, and you can use this view tab by showing the presentation, by showing the slides. It has each and every option, like आपको यहाँ पे जिस तरह से अपनी जो है presentation show करनी है, so these were the options, you can use it and you can show your slides as you want to show. Like यहाँ पे आपको slide sorter का जो option है, if you want to go to activate it, so now your whole slide would be in a sequence form. I will going to create one more slide, so you can get to know that what are actually slides. यहाँ पे जो है मैंने कुछ 4 slide generate कर ली हैं, and now I'm going to show that how it will going to sorted your slide. So this how he will going the so this how your presentation view tab, the view tab will show your presentation in the sorted form. अब आपको यहाँ पे सारी स्लाइड्स जो है वो सॉर्टेड फॉर्म में नजर आ रही होंगी इफ यू यूज दिस ऑप्शन स्लाइड सॉर्टर. ओके, नोट्स पेज, अगर आप नोट्स पेज यूज करते हैं, इफ यू यूज द ऑप्शन नोट्स पेज, सो योर स्लाइड वुड नाउ शोन इन द नोट्स ऑप्शन. अब आपको यहाँ पे एक नोट्स की सूरत में आपको सारी स्लाइड्स जो है आपको शोन हो रही होंगी. लाइक आपको यहाँ पे एक स्क्वायर है, मतलब अब आपको जो है पोर्ट्रेट फॉर्म में नोट्स की सूरत में जो है आपको स्लाइड डिस्प्ले होंगी. रीडिंग व्यू अगर करेंगे हम, सो सी now you're going to see your slides in a reading form. अभी जो है यहाँ पे हमने जो है कुछ भी क्रिएट नहीं किया है, सो ये भी मैं आपको रीडिंग व्यू का ऑप्शन जो है एग्जांपल प्रेजेंटेशन में शो करता हूँ. just we have to finish this, then we're going to move towards the example presentation. Slide master का ऑप्शन है यहाँ पे. Like see, now you're going to see the a demo template. Like अब आपको यहाँ पे शोन हो रहा होगा एक आपको बनी बनाई एक टेम्पलेट शोन हो रही है, आप उसको यूज कर सकते हैं, and you just have to add these things and create your presentation. So आपको यहाँ पे मास्टर स्टैट के सूरत में आपको यहाँ पे बहुत सारी डिफरेंट चीजें या डिफरेंट आपको स्टाइल्स मेंशन है, आपको सिर्फ और सिर्फ इसको एडिट करना है, एंड यू विल हैव टू एडिट योर topic in this master slide. You have to just do your creativity, you have to just show your creativity in this option. ये आपको बनी बनाई चीज मिल चुकी है, आपको सिर्फ इसको एडिट करना है. Okay, so if you go to close this, so I'll close so our master so slide has been ended. So now we have an option of handouts master. अब आपको यहाँ पे handout of master का option नजर आ रहा होगा. यहाँ पे आपको जो है यहाँ पे every slide you can show every slide in one पोर्ट्रेट फॉर्म. आपको एक पोर्ट्रेट फॉर्म में तमाम स्लाइड्स आपको शोन हो रही होंगी, 1 2 3 4 5 6, एक के सामने एक स्लाइड जो है वो शोन हो रही है, और इस तरह भी आप अपनी जो है स्लाइड को डिस्प्ले कर सकते हैं. दिस इज आल्सो वन ऑफ द फीचर, लाइक यू कैन डिस्प्ले योर स्लाइड इन दिस फॉर्म एज वेल. Actually this view tab is all depends on how you display your slide.
slide. इसमें कोई ऐसी एडिटिंग वगैरह की या कोई भी ऐसा टूल नहीं है जो जो आपकी स्लाइड को एडिट कर सकता है या कोई आप अपनी स्लाइड में ऐड कर सकते हैं. ये सिर्फ और सिर्फ आपकी स्लाइड को डिस्प्ले करने के बहुत सारे तरीके हैं जो इस टैब में गिवन है. सो यू हैव एन ऑप्शन ऑफ रूलर. You can add a ruler as well. You have option of grid line. आप यहाँ पे grid line भी insert कर सकते हैं. You have option of guides as well. अब आप यहाँ पे guides भी लिख सकते हैं. like आपको यहाँ पे lines मिल गई हैं graph form में, and you can make it your slide in this form. Okay. So in this form you can create a slide. Usually लोग जो है वो presentations जिनको mathematical presentations या कुछ numerical presentations they want to create, so they use this option so that they can make their presentation in the sequence, in a correct sequence. So ये वो लोग जो है use करते हैं these grid lines, rulers and guides. Okay. So then we have an option of zoom. like आप इसको zoom भी कर सकते हैं. आपको जितना पर्सन आपको जूम करना है आप अपनी प्रेजेंटेशन को जूम इन और जूम आउट भी कर सकते हैं. फिट टू विंडो का मतलब ये है कि जितनी जो है आपकी विंडो, जैसे कि अभी आपको शोन हो रहा होगा, द प्रेजेंटेशन वाज displayed according to my screen के अकॉर्डिंग जो है वो the slide was displaying. So this was happened just because of fit to window option. मैंने fit to window जो है किया हुआ है, then so that my slide would be display according to my window. अगर मैं आपको यहाँ पे थोड़ा जूम करके दिखाऊं, like अगर जो है मेरे को 100% जूम कर दिया है, see now it was zoom in, बहुत ज्यादा जूम हो चुकी है, and now you are going to face difficulty by creating the slide. And if you're going to click on fit to window, so see slide would be fit according to your window, according to your screen. Okay. Other than this you have a color option as well. अब आप जो है अगर आपने अपनी जो है स्लाइड को कोई भी you haven't given any of the background और आपने कोई भी जो डिजाइन अभी तक ऐड नहीं किया है, so you are going to add, so this through this you are going to get many option like through color view option. आपको यहाँ पे ब्लैक भी आपको शो हो रहा होगा, यहाँ पे ब्लैक एंड व्हाइट फुल आपको जो है यहाँ पे शो हो रहा है, ब्लैक विद ग्रे. So you can see that the borders was now changed into black color. You're going to see this gray with white. So यहाँ पे बहुत सारे different colors हैं जो कि आप easily select कर सकते हैं from this color view option. Now I'm going to back to my color option. अच्छा, उसके बाद जो है आपके पास ऑप्शन है न्यू विंडो. you will going to appear न्यू विंडो as well. आपका न्यू विंडो शो हो रही होगी मगर अभी आपकी स्टॉप शेयरिंग हो गया है. ओके. ये जो है आपको मैं विंडो शो करते हैं मगर उससे पहले जो है आई एम गोइंग टू शेयर माय अगेन स्क्रीन. ओके. सो सी सो इस तरह जो है अगर आप न्यू विंडो ऑप्शन अगर आप सिलेक्ट करते हैं, सो यू विल गोइंग टू सी अ न्यू विंडो, आई मीन अ न्यू प्रेजेंटेशन. एक नया प्रेजेंटेशन का जो पूरा खुल जाएगा एंड यू विल गोइंग टू सी अनदर प्रेजेंटेशन. So इस तरह आप two presentation you can activate in one time through this new window option. Okay, then you have an option arrange all, cascades and move split. So ये जो है सारी जो है वो new window के option में आती हैं और आप उसको अपने तरीके से arrange कर सकते हैं. आप split option भी arrange कर सकते हैं, like one presentation is on one side, one presentation is on one side through this arrange option. You have an option of switch window as well. If you want to work on the presentation 1, so you want to switch to presentation 1. If you want to work on the presentation 2, so you can switch the window to presentation 2 as well. You have an option of these things so that you will go to display the presentation as well. अब जो है हमने यहाँ पे बहुत सारी जो चीजें जो है हमने डिस्कस कर ली है कि हाउ वी कैन डिस्प्ले द प्रेजेंटेशन. वी हैव many things like presentation view option and master view option and zoom and colors, windows. So these are options that came under the view tab. We have also discussed about the how we can research any term. We have an option of translate as well. We have an option of language as well. Like we can add any language we want to add, and we have a slideshow option as well. We can record the slideshow. We can adjust the timing of the slideshow. We can adjust the resolution of the slideshow as well. We can hide any slide that we want to, that we don't want to show in the slideshow. So these were the options that came under slideshow. Animation as well. We have ट्रांजिशन एज वेल. सो ये सब चीजें जो है हमने आज के इस सेशन में डिस्कस की हैं. अब जो है मैं आपको एग्जांपल जो प्रेजेंटेशन है वो शो कर रहा हूँ. यू हैव टू वेट अ मिनट. आई विल टू फर्स्ट ओपन दैट slide. If you have any type of question, so you can ask in the chat box if you have any question left. So I want to answer that query because today is the last session of Microsoft PowerPoint. Then we're going to move towards another tool, which is Microsoft Excel. Okay, now I'm going to share my screen. Okay, so this was
this was actually a presentation which was made too early, like ये एक तरह से डेमो presentation समझ लीजिए, ये कभी जो है हमने बनाई थी. This was actually depends on